आता आम्ही येयल्या हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा जुने गोंय ओल्ड गोवा हांगासर जी एक प्रॉपर्टी आसा हेजे फाटल्यान दिसता ती त्या प्रॉपर्टीच्या कुशीक एक निळे पत्रे मारून एक नवीन प्रोजेक्ट येता असो दिसता। कारण तेजे हांगासर भूमिपूजन जाल्ल्याचें आमकां दिसता, त्यामुळे हांगा कितें तरी नवीन प्रकल्प येता हें क्लियर जाता। सो हांगासरूच हेच्या फाटल्यान तो हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाचो जो प्रोजेक्ट आसा व्हडलो तेच्या फाटल्यान हो प्रोजेक्ट आसा। सो हांगासर कितें तरी हांगा विधी जाल्ली आसा हें लक्षान येता। मुद्दो प्रकल्प उबे करप, एका विरोध करप अशातली बी गोष्ट ना, पण हे प्रकल्प उबे करता आसतना आमच्या पर्यावरणाचो जो ऱ्हास जाता, जे पर्यावरणात जे नश्ट जाता, हांगासरली जीवसंपत्ती जी आसा ती नश्ट जाता। कारण अनेक झाडांची कत्तल, ह्या इतल्याय झाडांची कत्तल ह्या प्रकल्पा खातीर जातली। हांगा कदाचित बंगले जातले, कांय फ्लॅट्स जातले, मोठे मोठे इमारती उबारल्यो वयतल्यो, पण त्यो इमारती उब्यो करता आसतना कितलीं झाडां कापली वयतलीं हेजो खंय तरी हिशोब आमी दवरतले काय कितें, हो मुद्दो आसा। आनी ती एक चिंतेची गोश्ट आसा। कारण हांव नकळो की हे सगळीं झाडां कापपाची परवानगी ही फॉरेस्टान हे प्रोजेक्टाचो कोण ओनर जो आसा जेजो कांय भायर बोर्ड ना, तेजे कांय डिटेल्स ना। नॉर्मली कशें आसता की अशे प्रोजेक्ट जेन्ना बांदले वयता तेन्ना तेज्या भायर तेजेर एक बोर्ड मारलो वयता, त्या प्रोजेक्टाचो कोण ओनर आसा तेजे डिटेल्स आसता आनी हो प्रोजेक्ट नेमको कितें आसा, तेजी व्याप्ती कितें आसा हो कायद्यान थंयसर बरोवचें पडटा। पूण तशा प्रकारचो बोर्ड आमकां कांय दिसलो ना। नाल्यार कदाचित आमी जो कोण ओनर आसा, जो कोण प्रोजेक्ट ओनर आसा तेका संपर्क करून विचारतले आसले ह्या संबंदी कितें आमकां जे तपशील जाय ते। कारण कशें आसा, एक जागरूक नागरीक म्हणून आमी एक गोश्ट लक्षान दवरपाक जाय आनी आमची जी ऑथॉरिटीज आसा, जावं ती ग्रामपंचायत जावं TCP, ह्या सगळ्यांनी याद दवरपाक जाय की आमकां आमचें गोंय टिकोवपाक जाय जाल्यार ही कांय झाडां जी आमच्या आडेकडेक उरलेली आसा ती आमी कशी तिगयतले। प्रोजेक्ट जावपाकूच जाय, लोकांक घरां मेळपाकूच जाय, पण ती घरां मेळटा आसतना गोंयकारांक मेळपाक जाय। कारण आमी हांगासरले पयले म्हणजे हकदार आसा। आमच्या कायद्या प्रमाणे ही जमीन आमची असल्या कारणान आमच्या लोकांक ती मेळपाक जाय। कोण तरी भायले येतले दिल्लीवाले आनी हांगासर आपले घर तयार करतले, तांकां सहज शक्य आसता विकती घेवप। आमच्या गोंयकारांक ही परवडटली काय ना हो वेगळो मुद्दो आसा। पूण सोड, शेवटी भारतीयच घेतले त्यामुळे हें ना। पण मूळ मुद्दो आसा तो पर्यावरणाचो आमी कितलो ऱ्हास करतले, पर्यावरण कितले नश्ट करतले आनी तेजेर आमची घरां कशीं बांदतले आनी ती घरां बांदल्या उपरांत आमकां श्वास घेवपा खातीर म्हणून शुद्ध हवा मेळटली काय कितें। तुमी पळयात हांगासर बऱ्या पैकी ही सगळीं झाडां आसा। ही झाडांची आतां जर आमी कावंटींग करूंक गेले जाल्यार म्हाका दिसता कमीत कमी 500 झाडां तांकां कापली वयतलीं। आनी ह्या 500 झाडांची कत्तल करपा खातीर फॉरेस्टान हाका परमिशन दिल्लें आसा काय कितें। आनी फॉरेस्टान जर परमिशन दिल्लें जाल्यार तेज्या खातीर खंयचो क्रायटेरिया तेंच्यांनी आपणायला। कारण हांगासर म्हाका दिसता की कांय काजी सुद्दां हांगासर आसा आनी त्यो बऱ्या स्थितीन आसा। हांगासर एक काजी पळय हांगासर एक मुट्टो लागलेलो म्हाका दिसता। म्हणजे अशें ना की सामकीच ओसाड पडलेली अशी ही जागा आसा अशातली गजाल ना। हो पळयात, हो मुट्टो आसा आनी आडे कडेक आमकां हांगासर काजी दिसता। सो ह्यो काजी आसा
म्हणजे लागवड आसा. आणि अशा परिस्थितींत हे जे पंचायतीन परमिशन दिल्लें आसा हे आमच्या पंच सदस्यांनी, हांगासरलो जो कोण पंच आसतलो तेणें जावं सरपंचान हेजो वेवस्थीत अभ्यास करून एका परवानगी दिल्ली आसा काय कितें. कारण कशें आसा, आमी आमचे प्रतिनिधी म्हणून तुमकां निवडून दिता आणि त्या प्रतिनिधित्वाचो योग्य वापर हो तुमी त्या खुर्चेर बसल्या उपरांत करचो, अशी एक आमची माफक अशी अपेक्षा आसता. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे हांगासर पळयशात, तुमी पळयात कितलीं झाडां दिसता. वयर पर्यंत वचत जाल्यार आनी खूब झाडां आमकां मेळटलीं. महत्वाची गजाल जी हांव सांगतालो ती ही की हांगासर एक इलेक्ट्रिसिटीचो बोर्ड लायिल्लो आसा. त्यामुळे हांगासर परवानगी ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळिल्ली आसा. आणि हो जो मिटर आमकां दिसता त्या मिटराचो नंबरूय तुमी पळोवंक शकता. हांगासर 23112548 असो नंबर तेजेर घातलेलो आसा. आणि हांगासर लायट्स येवंक शकता. म्हणजे हांगा काम कितें तरी जातलें. अजून तरी काम दिसना, अजून झाडां आमकां दिसता. आमचें नशीब बरें आसा की झाडां आतां आमकां पळोवंक गावता. कदाचित आनीक कांय दिसांनी ही झाडां आमकां पळोवंक गावची ना. सो अशी परिस्थिती आसा. तुमी पळयतात हांगा हें कितलें व्हडलें रान आसा आनी हें रान जें नश्ट जातलें. पळयलां म्हणजे तेंच्यांनी काम हांगासर सुरू केल्लें आसा. ही झाडां कापपाचें काम हांगासर सुरू केल्लें आसा. आनी हांगासर हो पळय जोळो करून दवरला, लाकडां दाळून दवरल्या. हेजोच अर्थ वयल्यान झाडां कापपाक तेंच्यांनी सुरू केल्लें आसा. आनी ही पळयात अशा स्थितीन ही झाडां आमकां आडवी पडलेलीं दिसतलीं. आनी हे ज्यो दाळयल्यो हें दिसता जोळो, त्याच प्रमाणे आमकां कालांतरान म्हाका दिसता ही सगळीं झाडां ते आडवे उडयतले आनी अशा प्रकारचे मळ हे आमकां पळोवपाक गावतले. ही पळय इतलीं झाडां कापल्या. हांव परत एकदां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विनंती करता की तेंच्यांनी ही हेजी परवानगी दिल्ली काय कितें. ही इतलीं झाडां कापपाची परवानगी दिल्ली काय कितें, आनी दिल्ली जाल्यार तेजो पूर्ण अभ्यास करून दिल्ली काय कितें. हांगासर ही पळय काज मारलेली आसा. ही ताजी काज मारलेली आसा आनी ही काज आमकां हांगासर पडलेली दिसता. सो ही काजूची झाडां हांगासर कापली गेली. आमची खरें म्हणल्यार काजू ही गोंयची आयडेंटिटी आनी ह्यो काजी हांगासर अश्यो आड पडलेल्यो आमकां दिसता ह्या प्रोजेक्टाच्या नांवान. हो जो निनावी प्रोजेक्ट आसा हेजो आवय बापूय आमकां खबर ना अजून कोण तो. पण हो प्रोजेक्ट करता आसतना सरकाराक एक विनंती करीन दिसता की तुमी प्रोजेक्ट करपाक परमिशनां दिता आसतना पुरेपूर अभ्यास करून तें परमिशन दिवचें. कारण कशें आसा, शेवटी बिल्डिंग्यो उब्यो जाल्यो म्हणून सगळें बरें आसतलें अशातली गजाल ना. कांय जाग्यांचेर बिल्डिंग्यो उब्यो जाल्यो, थंय रावपाक लोक येयले, पूण तांकां घेवपाक जर श्वास जाय जाल्यार ह्या झाडांची गरज आसतली. सो त्यामुळे ही झाडां हांगासर टिकपाक जाय, हेजी खबरदारी ही घेवपाक जाय. हांगासर काही कामगार येयल्ले आसा. प्रोजेक्ट कोणाचो? ये मालूम नहीं, लेकिन हमें आना तो पात्रा हमको मालूम है, परेश नायक जो हम लोग आते हैं। आप कौन है? मैं गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, आप परेश नहीं हो? नहीं नहीं, परेश किसका आदमी है? वो इधर ही का है, कॉन्ट्रैक्टर हमारा सेठ है। ओल्ड गोवा का है? नहीं, इधर क्या बोलते उसका इधर का परमिशन है झाड़ काटने का? हैं? हाँ, लाइसेंस हुआ, जितना लाइसेंस है सब पे नंबर डला, वही झाड़ कट कर। हाँ? लाइसेंस हुआ, नंबर दिखाओ किधर मारा है। वो लाल नंबर में दिखा रहे किधर लिखा है, सब पे परमिशन है इसका। और लाइसेंस का कॉपी है हाँ, तेरे पास? हाँ, बस
पतराम से बात करवाता नहीं नहीं नहीं, तो भेजेगा। तुम लोग का पास है नहीं इधर, नहीं हमारे तो पास कैसा मारता पहला? नंबर लिखा है, जो पेड़ पर नंबर नंबर लिखने के बाद नहीं, पहला तुम्हारा पास इधर ऑर्डर है ना बेटा। ऑर्डर है मोहतरम, जो नंबर पेड़ पे नंबर लिखा वही पेड़ कट करने का बस, और दूसरा नहीं। नंबर है जिस पे वही झाड़ कट करते हैं। नंबर दिखाओ किधर है? हमारे इधर देखो वो लिखा है लाल में कलर में, उधर है और नंबर उधर है। मतलब पूरा पेड़ नहीं काटोगे आप? पूरा नहीं काटेगा, जितना लाइसेंस हुआ उतना कट करने का। लाइसेंस मिला है इसका? जितना लाइसेंस है उतना कट करने का इधर, यानी 47 तक है इधर बस, और पूरा नहीं कट करने का। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। अभी जो आप पेड़ काटोगे उसमें बिल्डिंग कैसे बनाओगे? पूरे तो काटने पड़ेंगे ना? नहीं नहीं, वो बाद में लाइसेंस होता है, जितना पेड़ का लाइसेंस हुआ उतना कट करने को मिलता है। थोड़े थोड़े करता थोड़े थोड़े एकाएक लाइसेंस पूरा नहीं मिलता है पतराव। क्या फिर लोकांग का इतने नो अभी इतना ऑर्डर हुआ यानी 47 तक मिला, बाद में यानी जिसका ही प्रॉपर्टी है वो उधर फॉरेस्ट ऑफिस में जाके इसका वो करेगा, फिर लाइसेंस मिलेगा। अच्छा।